तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगा ईवा। ईवा का जो पोएम है वह है नो डिसअपॉइंटमेंट। My name is Eva. एक सेकंड रुक जाओ, मुझे रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे पास नहीं है, फोन नहीं है। हाँ, My name is Eva. I am 13 years old. I read in class 8. I learn here ethics and no belief. I go to Sri Swamiji and Sri Devi Ji. My humble pranamas to the guests on the stage and all in the audience. I shall sing a small poem, no disappointment, for you all. Kindly pardon me where I have mistaken. I love my papa no less than my ma. Papa tells us stories of his life, but our health and schooling viewed our ma. In the stories of my papa's life, I remind, he said, while he was a child, then the teenager Swamiji, our dearest Manavtavadi Swamiji, had been teaching all children's ethical or moral values and moral responsibilities. All natural, all human and all rational, but living and dying for one's self is very lowly and below normal. We have a lot to learn from a nature as natural. In the hive, bees collect honey from the all flowers, the drop of nectar, even though stolen by a bear or a human. They never bear disappointment to get refrain. सत्य की जय, वीरता की जय, क्रांति की जय। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ईवा। ईवा ने हम सभी को निराश नहीं होने की एक बहुत बड़ी सूचना दी, बहुत बड़ा सूत्र दिया है। इन्होंने बताया कि मेरे पिताजी जब यहाँ पढ़ते थे, जब बचपन में, जब छोटे थे, मेरी आयु के थे, तो स्वामी जी उन्हें सिखाते थे किस प्रकार से नैतिक बनना है, नैतिक रहना है। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ सब कुछ प्राकृतिक है, सब कुछ मानवीय है, तर्कसंगत है, परंतु हमें प्रकृति से बहुत बड़ी चीजें सीखना चाहिए। जैसे मधुमक्खी है कि किस प्रकार से वह अलग अलग फूलों पर जाकर उनके पराग चुनकर शहद बनाती है, और लोग जब उस शहद को ले लेते हैं तो वह निराश नहीं होती है। उसी प्रकार से हमें भी अपने आप को इतना तर्कसंगत और इतना नैतिक बनाना चाहिए ताकि लोग हमारे सीख पाए और लोगों को हम बांटते हुए आगे बढ़ें और हमें किसी तरह की निराशा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद ईवा। अब